हेलो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। सो फर्स्ट ऑप्शन है द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। एंड सेकंड ऑप्शन कह रहा है द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। देन थर्ड ऑप्शन कह रहा है द रिफ्रैक्टिव indices of dispersed phase and dispersion medium are almost similar in magnitude। एंड जो डी ऑप्शन कह रहा है वो है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। सो गाइस, यहाँ पे जो ए पार्ट है वो कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है और ऑप्शन ए है जो रॉन्ग है, क्योंकि जो डिस्पर्स पार्टिकल है वो नॉट मच स्मॉलर, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज से। देन जो सी पार्ट है वो कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन मैग्नीट्यूड। और डी पार्ट कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्जन फेज dispersed phase and dispersion medium में greatly differ in magnitude। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट है और ऑप्शन जो सी है रॉन्ग है, क्योंकि जो डिस्पर्जन और डिस्पर्स्ड फेज है वो डिफर कर सकता है मैग्नीट्यूड में। सो थैंक यू गाइस। Hello, so let's start solving the question. And question says that for a linear plot of log x by m, right? So log x by m versus log p, right? Here is it is log p, right? So which of the following statement is correct, right? So option A says that 1 by n appears as an intercept. Option B says that 1 by n appears as a slope, right? And option C says that log 1 by n appears as the intercept. And option D says that both a and 1 by n appears in the slope term, right? So we know that in what will happen in the Friendly's adsorption isotherm, right? So we know that Friendly's adsorption isotherm is a graph, or is a, you can say that it's an isotherm between the extent of adsorption versus pressure, right? So it is a adsorption isotherm versus extent of adsorption versus pressure, right? So we know that if in the according to the Friendly's adsorption isotherm, the x by m, you can say that the extent of adsorption, right? So this is extent of adsorption x by m is equals to, right? Or you can say that is equals to k p 1 by n, right? K p की power 1 by n, right? So if I am taking the log on both sides, we get log x by n, right? Log x by m is equals to log k p to the power 1 by n, right? So I can expand it, right? So log x by n, log x by m, right, is equals to log k plus, right, log k plus 1 by n into log p, right? So this becomes, if I compare it with the straight line equation, then I can rewrite it, right? Log x by m is equals to 1 by n, right? And it is log p, right, plus log k, right? So it is log k, right? So if I compare it with the straight line equation, right, so this becomes our y-axis and this becomes our x-axis, right? And this becomes our x-axis and this is our slope, right, m, and this becomes our constant c. So it becomes y is equal to mx plus c, right? So here I can say that slope is our, what is the value of m? From here we can see that the value of m comes out to be n, right? So I can say that the value of slope is equals to 1 by n, right? The value of slope is equals to 1 by n. The value of c, that means the value of intercept, is equals to log k, right? So value of c comes out to be log k, right? Let's check the option. Option A says that 1 by n appears as the intercept, right? So 1 by n appears as the intercept, right? But we get in log k as the intercept, right? So we can say that the option A becomes wrong, right? And option B says that only 1 by n appears as the slope, right? So we get the slope 1 by n, right? So the option B is the correct answer, right?
And option C, log 1 by n appears as intercept. No, it is not right answer because we get only log k as intercept, right? Both k and 1 by n appears in the slope term. No, we only get in the slope term as a 1 by n, right? So option D becomes automatically wrong. So we are left only with correct answer is B, right? So hope this answered your question. So thank you. Hello everyone, this is our question. Let me explain it to you. Methylene blue from its aqueous solution is adsorbed on activated charcoal at 25 degrees Celsius. Identify the correct statement. So if we talk about this adsorption, then it is actually physical adsorption that is taking place here. Okay, and discussing about the physical adsorption, then it takes place with the decrease in enthalpy, right? It takes place with the decrease in enthalpy. Thus, it is an exothermic change. Okay, it is an exothermic change, right? And it is because of physical adsorption, so it does not require any activation. Does not require any activation. So if we read the first statement, the absorption requires activation at 25. This is wrong because physical absorption don't require it. The second statement, the absorption is accompanied by decrease in enthalpy. This is true. Okay, so because there's the exothermic change. And now if we talk about the exothermic change, then we know that according to Le-Chat-Layer principle also. So if this is exothermic change, then what happens? Delta H is less than 0. Okay, so exothermic reaction is always favored at low temperature. Already heat is released, so it is favored at low temperature. So reading this first statement, the adsorption increases with increase of temperature is wrong. So because of exothermic region, at low temperature it is favored. The last is saying the adsorption is irreversible. Then it is also wrong because physical adsorptions are actually reversible in nature. Okay, so we will get the phase back and basically the medium as well in the same state. So this is also wrong statement. So B is the correct answer. Thank you. Hello students, question में है given है the coagulating power of electrolytes having ions Na plus, Al3 plus and Ba2 plus for arsenic sulfide sol increases in the order. हमें कुछ electrolytes दिए हुए हैं लाइक आयंस दिए हुए हैं Na प्लस, Al3 प्लस और Ba2 प्लस, ठीक है. इनके कोआगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के ऑर्डर के बेसिस पे हमें इन्हें अरेंज करना है, ठीक है. किसके लिए अरेंज करना है? आर्सेनिक सल्फाइड सोल है, उसके लिए अरेंज करना है कि किसकी कोआगुलेटिंग पावर आर्सेनिक सल्फाइड सोल की तरफ ज़्यादा होगी और किसकी कम, राइट. ऑप्शन दिए हुए हमें. ऑप्शन 1 में कहता है कि Na प्लस की सबसे ज़्यादा होगी फॉलोड बाय Ba2 प्लस फिर Al3 प्लस, ठीक है. ऑप्शन 2 में गिवन है एल्यूमिनियम 3 प्लस की सबसे ज़्यादा होगी फॉलोड बाय बेरियम 2 प्लस एंड सोडियम 2 प्लस. ऑप्शन 3 में गिवन है कि एल्यूमिनियम 3 प्लस की सबसे ज़्यादा होगी फॉलोड बाय Na प्लस एंड Ba2 प्लस. एंड ऑप्शन 4 में गिवन है कि बेरियम 2 प्लस की सबसे ज़्यादा होगी फॉलोड बाय सोडियम प्लस एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस, राइट. तो क्या होता है कि फ्लॉक्यूलेटिंग पावर ऑफ आयंस, एक रूल होता है ये, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन चार्ज, ठीक है. चार्ज के साथ साथ फ्लॉक्यूलेटिंग पावर इंक्रीज होती है, डिपेंड करती है ये चार्ज पे, राइट. ये किसके अकॉर्डिंग होता है? अकॉर्डिंग टू हार्डी-शुल्ज़े रूल. ये हार्डी-शुल्ज़े रूल कहता है, राइट. और इस रूल को हम, ये जो फ्लॉक्यूलेटिंग पावर होती है इसको हम एक और नाम देते हैं जो कि होता है गोल्ड्स नंबर, राइट. तो अब हम देखते हैं ये जो 3 आयंस दिए हुए हैं हमें Na प्लस, Ba2 प्लस और Al3 प्लस, सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है? एल्यूमिनियम 3 प्लस का. तो कोआगुलेटिंग पावर जो होगी इस ऑर्डर में होगी, फिर होगा बेरियम 2 प्लस और लास्ट में होगा सोडियम 2 प्लस. सो बेस्ड ऑन द अबव 4 ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द हार्डी-शुल्ज़े रूल, राइट. थैंक यू.